just to make sure that I'm reaching out to you guys. Or in case if somebody is not able to hear me, then there is this small little icon on your mobile phones, join audio. You need to tap onto join audio and then call over internet for us to be audible. So please type in yes if I'm audible. Please type in no if you are having any kind of a problem in hearing me or seeing the screen which is being shared. All right. So I'll assume that everything is pitch perfect. In case anybody is having any audio challenges, we'll be sharing our Facebook Live link as well. You can join us on Facebook Live as well. Meanwhile, आप लोगों के पास में एक छोटा सा पोल है. Please make sure that you respond to that poll. Hello, Kashmira ji. Nice to see your face. It would be great if we can see everyone. Good evening, Miss Nasreen. We had a small little chat this evening. Yes, I welcome you. So all of you guys, only around 40% of you have voted so far. We really want to know. It is very important because we need to understand these things. जब आप लोग वेबिनार देखते हो तो उसके बाद में people who are interested in this and that, so we do make sure that we reach out to them, we make a call and so on. There's some very common questions that we get. Now this is something which I want to address. This poll is one tool in that direction. See, the thing is that thyroid never comes. It's not necessary that it does not come. That it comes alone. There's so many things which are associated with thyroid. There are a lot of things which are associated with thyroid. So I'm going to mention some 6 things, which is based on my observation and my understanding on how thyroid works and what all it affects. Number one, it definitely does affect for a lot of people, not necessary for each and every single one. For a lot of people, it affects the skin quality and the hair quality. So for a lot of people, skin में pigmentation शुरू हो जाते हैं, rough और dry skin शुरू हो जाती है and so on. For a lot of people, quality of hair deteriorates. Hair thinning होनी शुरू हो जाती है, पतले बाल शुरू हो जाते हैं. There are small little bald patches and some people go completely bald as well. So skin and hair quality is definitely getting impacted. Then there are issues about heart rhythm. So BP, tachycardia, bradycardia, घबराहट होना, etc. All of those things are not disassociated. The reason why I'm trying to tell you all of this is so that you understand that these things are connected with thyroid. There are no 2 separate or 3 or 4 or 10 separate diseases that you are having. There is just one small little root cause that we need to identify and resolve. उसके बाद में other than skin, hair quality, heart rhythm, there are mental health issues. A lot of people are having low confidence, episodes of anxiety, depression, and several other things. Those emotional turbulences and imbalances, people getting into quarrels with the loved ones and so on. So वो सारी जो situations हैं, वो situations भी बहुत ज़्यादा आती हैं for people who are into thyroid. Then weight management is the 4th one. People are in hypo. Can you please type in how many of you, if you are having a hypo situation, please type in yes. If you have a hyper situation, please type in 2. हाइपो में लोगों का वेट बढ़ता है और हाइपर में लोगों का वेट कम होता है. सो दैट काइंड ऑफ अ सिचुएशन हैपेंस विद अ लॉट ऑफ पीपल, these weight challenges. Then digestive disorders, different kinds of digestive challenges, acidity ka, bloating ka, burping ka, constipation ka, many such situations do happen. And then because thyroid is the master hormone, something very very important for us to understand, extremely important, it connects the entire endocrine system. एंडोक्राइन सिस्टम का मतलब है तमाम तरह के जो सिक्रेटरी हार्मोनल ग्लैंड्स होते हैं, वो सारी चीज़ों का कॉम्बिनेशन. सो इफ यू आर हैविंग प्रोलॉन्ग्ड थायराइड सिचुएशन, देन योर एड्रीनल ग्लैंड माइट गेट कॉम्प्रोमाइज. आपको लगातार थकान रहना, स्लीप क्वालिटी पुअर होना, एक्सेट्रा, वो दैट ऑल ऑफ दैट इज पॉसिबल. एंड सेम इज विद इंसुलिन. A lot of people, especially people who are on medication, they get into different kinds of issues, hormonal imbalances, especially diabetes. डायबिटीज टाइप 2 बहुत लोगों को डेवलप होती है. ओवर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ सच सस्टेनेंस ऑफ सच डिजीजेस, you also might get into kidney issues. The point I am trying to make is why it is important for you to answer to this poll, because I am going to throw it out open to all of the rest of the guys.
आप लोगों में से केवल आधे लोगों ने, इनफैक्ट आधे लोगों ने भी वोट नहीं किया. प्लीज मेक श्योर दोज ऑफ यू हु हैव नॉट वोटेड येट, प्लीज मेक श्योर दैट यू रेस्पॉन्ड टू द पोल्स. पोल आप लोगों के सामने है, पोल पे रेस्पॉन्ड जरूर करिएगा. इससे आप लोगों को काफ़ी चीज़ों के बारे में जानकारी मिलेगी, क्योंकि ये सारी चीज़ें कनेक्टेड हैं आपस में. नाउ no, if there are no issues, then see, basically another important thing for us to understand is lab reports is one thing and symptoms is another. There is something very important which is there, quite prevalent and quite common these days, specifically in past 10-15 odd years, is subclinical hormonal conditions. ज़रूरी नहीं है, और टेस्टिंग के भी 1000 लैब्स आ गई है और 1000 तरीके हैं. ये ज़रूरी नहीं है. अगर आपको सिम्टम्स आ रहे हैं तो सिम्टम्स के ऊपर जाइए. अगर आपका वेट बढ़ रहा है और आप मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, आपको पेन्स हो रहे हैं, आपके बालों की क्वालिटी खराब हो रही है, एक्सेट्रा, ऑल ऑफ दोज काइंड ऑफ थिंग्स आर हैपनिंग विद यू. Symptoms is the thing that you should believe in. How your symptoms are talking, or your body is talking to you in the language that body understands, and body wants you to understand that language as well. तो ये सारी चीज़ों को लेकर ये प्रोग्राम है. So it is, Kumbhak therapy is one single solution which helps us identify the root causes of why you are getting into chronic illnesses and address the very basic of that root cause by attacking the functional inefficiencies और जो भी inaccuracies आपकी बॉडी में बन गई हैं over a period, बॉडी उसको ठीक तरह से कर नहीं पा रही है, वो कैपेबिलिटी बनाने के लिए. We'll talk about all of that. To talk about Kumbhak and Kumbhak therapy, I'll introduce Mr. Navneet and Mr. Rajiv Ranjan. But before that, a small little introduction about myself. My name is Ayush. I'll be your host tonight. I'm one of the co-founders of Yellow Scotch. Now, you have been brought here, with our efforts on Facebook, Instagram, and many information pieces that we have shared with you on WhatsApp, maybe. So I just want to make sure that you understand what we are trying to achieve here. So Yellow Scotch is an aggregation platform. What we are trying to do is we are trying to find solutions, not management, but for cure. We are trying to find solutions for cure of different chronic conditions. So our job is, basically, there are 4 things that we do. First thing is that we try and identify the modality and the expert who has been very effective for a specific condition or specific situation, such as thyroid and hormonal imbalances. Kumbhak therapy has performed extremely wonderfully well. So we do that identification of the right modality and help you meet the right kind of expert with a proven efficacy. So there are 16-point checkpoints that we have to ensure all of this happens in a perfect manner. Second, we make sure that we disseminate all the information that you need to make the right buying decision. जो भी program के बारे में जानकारी लेनी है, WhatsApp groups, all the content pieces that you have seen, this webinar, phone calls, everything is an effort in that direction. Then the third important thing we do is that we design the program, or we rather help design the program in such a manner so that we reach out to more and more people while sitting at home and help them benefit during these COVID times. बड़े आराम से, कहीं नहीं जाना, कोई people interaction नहीं, and they solve the chronic conditions, which is right now extremely important to solve. And finally, for any escalation, so that your experience remains pitch perfect, you can always reach out to us, and we are there to help you, assist you, guide you, and point you in the right direction. अब polls के बारे में मैं आप लोगों के सामने polls के results throw करना चाहता हूँ. As expected, I'm sharing the results of the poll. As you can see, hypothyroid बहुत लोगों को है, लेकिन एक चीज common इसमें आप देखेंगे तो 43% of people are having hair issues, 29% are having skin issues. Hypothyroid लगभग 20% लोगों को है, thyroiditis भी काफी लोगों को है. Awesome. So it's a very wonderful mix of different kinds of people that we have. But there are so many heart ka issue, mental health ka issue, skin ka issue. All of this is common, and this is something which I want you to understand. These are not separate conditions. This is just one simple root cause. Now, what is Kumbhak? What is Kumbhak therapy? What is how it works? And experiencing Kumbhak therapy, experiencing Mr. Rajiv Ranjan और स्वामी राज विभू, वो सारी चीजें करेंगे हम. बट उससे पहले मैं एक छोटा सा आप लोगों के साथ में एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ for people who have joined this program and what they have, how they have experienced or how they have benefited from this program.
मैंने अभी जनवरी बैच में ही अपना कुंभक थेरेपी स्टार्ट किया था एंड मतलब दिस हैज चेंज्ड माय लाइफ। मुझे एंजाइटी बहुत होती है बट आई डिडंट नो कि मैं इतनी जल्दी मेरे अपनी सारी प्रॉब्लम से इतनी जल्दी निकल आऊंगा। ठीक है, मतलब अमेजिंग थिंग अबाउट कुंभक इज दैट कि मैं कभी नहीं सोच सकता था कि मेरी स्पाइन में आधे घंटे 1 घंटे इरेक्ट करके मैं बैठा रह सकता हूँ। Still, I'm sitting in my correct spine posture, erect spine posture, and I really enjoy this position. ठीक है ना? तो and because of this, I think कि मेरी सारी बहुत सारी मतलब I feel peace in my life and peace in my mind. ठीक है, beside other elements like मेरे को नी में हमेशा पेन रहता था। I was finding it difficult to walk on। मैं वॉक नहीं कर सकता था, मेरा 8 किलोमीटर 1 किलोमीटर चलना बड़ा मुश्किल होता था। बट नाउ आई वॉक 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर 7 किलोमीटर a day and I find it very easy for me। ठीक है, एंड बिसाइड दैट मेरे बाल झड़ चुके हैं ऑलरेडी, बट अब मेरे बाल झड़ना बिल्कुल ही रुक गए हैं। ठीक है, एंड मेरे वाइट भी हो चुके हैं, बट अब फर्दर तो आई डोंट नो, बट मेरे बाल झड़ना बिल्कुल बंद हो चुके हैं। तो ये कंडीशन जो थी वो बिल्कुल ही खत्म हो चुकी है। मेनी थिंग्स उसके अलावा मतलब सबसे बड़ी बात जो है ना, मैं जो मेरे एंजाइटी जो रहा करती थी ना, मेरी एंजाइटी खत्म हो गई है। तो वो मेरे लिए बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है, क्योंकि मैं हमेशा सोचता कि पता नहीं मेरे पीस ऑफ माइंड कब होगा। ठीक है, एंड ड्यू टू कुंभक आई एम एंजॉयिंग। और अच्छा मुझे मैंने मेरे करीब 4 वीक्स हो रहे हैं मैंने अपनी मेडिसिन छोड़े, जनवरी में स्टार्ट किया और 4 वीक्स। तो मतलब दिस इज ऑल्सो अमेजिंग फॉर मी। So this is really, I'm very thankful to the Kumbhak team. Program. So I enrolled for the course, and right from day one, I did the morning and evening practices very diligently and with complete trust. Within a few weeks, I realized that symptoms such as acidity and headaches, which I used to frequently experience earlier, had reduced significantly. I just kept feeling stronger, and my health kept improving. Moreover, Kumbhak also has helped me lose some amount of weight. It has helped me increase my immunity. I used to fall sick pretty often earlier. I used to have frequent throat infections. Now I rarely fall sick. Moreover, Kumbhak has helped me experience a complete sense of well being, and it has helped me find happiness in every little thing that I do. So I look forward to living each moment with much more energy, vigor, and exuberance now. It's been 5 months since I have been doing these practices, and I didn't feel like missing these practices even on a single day. So Kumbhak has become such an integral part of my life now that it has almost become like food. So I'm truly grateful to Swamiji, Navneet for genuinely working towards transforming the lives of so many people. Thank you so much. तब से ये मैंने अभी 1 महीना हो गया ये कोर्स ज्वाइन किए। 1 महीने की एक्सरसाइज में मैं देख रहा हूँ कि काफी जनरल इम्प्रूवमेंट है। एक तो देयर इज अ लॉट ऑफ इम्प्रूवमेंट इन माय सजेशन एंड डाइजेशन एंड द जनरल फीलिंग, एंड माय टीएसएच रिपोर्ट हैज कम टू 0.31। आज तक कभी इतना कम आया नहीं है। पहले हमेशा 3, 4, इवन 10 तक रहता है टीएसएच। So it is a very clear indication कि there is improvement and I can reduce my doses. तो मैं दवाई भी अपनी डोजेस को आधी कर रहा हूँ। तो आई होपफुली अभी नाउ अब आशा जग रही है कि इससे बाहर निकल सकते हैं, एंड आई थिंक इससे बाहर निकल आएंगे। Rajiv ji gave me personal consultation for this, and in the last 4 to 5 months, I have benefited enormously. You know, my body was, it started feeling lighter, and I started feeling more agile. I started losing a bit of weight, and gradually I started feeling good. It was not at all difficult, you know, because the way now my body had started telling me what to eat, what not to eat, and the kind of response that I was getting from my body was amazing. And gradually things started improving. First, my medicines were reduced to half, and now for the last 1 month, I am completely off medication.
So no medicines for earlier I had this tachycardia also. So no medicines for tachycardia, no medicines for high blood pressure, and no medicines for hypothyroidism. And more or less, the levels are more or less normal at this point of time. Taking 100 mg and lots of problems when I joined him. And abhi kumbhak in and medicines out hai. All the medicine I was taking a lot of food supplement, lot of things whatever जो हम लोग को डॉक्टर्स बताते हैं दुनिया बताती है and सब छूट गया because राजीव जी ने सच में बहुत अच्छे से सब कुछ समझाया एक एक चीज को कि कैसे क्या चीज हमारे पे करती है ऐसा हमें पता ही नहीं है इवन वी डिडंट नो दैट घी हम लोग 2 चम्मच मॉर्निंग में लेते हैं हम लोग घी से कितना भागते हैं पता नहीं कितने साल से भाग रहे थे अब घी लिया है तो घुटनों में जो प्रॉब्लम चल रही थी अभी स्टार्टिंग हुई थी वो सारी खत्म हो गई और थायराइड ने मेरी सारी प्रॉब्लम्स को टेक केयर किया है इस कुंभक ने एंड आई वाज हैविंग थायराइड फ्रॉम सिंस age 24 when I was 24 now I'm in 40s और अब जाके मेरी गोली छूटी है जब मैंने थायराइड का कुंभक अच्छे से करना शुरू physically also. So my thyroid levels have also gone, my weight has reduced and I feel energized all the day. And there is a lot of change in how you see life, especially how you feel. So the purpose of sharing this entire experience of collective experience of different people was to help you understand that what you have mentioned in your polls, 75% of you are dependent on allopathic medicines. ये सारे external support mechanism हैं आपकी body को खड़ा रखने के लिए. But क्या एक कोई तरीका है जो हम body को internally enable बनाए और इस सारे support mechanism से बाहर निकल पाए? क्योंकि definitely I think all of you by now everyone understands इतनी information है कि allopathy in the long run is detrimental for our body. So 3/4 of you are suffering from allopathy. So that is the aim and ambition to help you come out of allopathy and your conditions and your disease. So I would want to welcome Mr. Navneet Kapoor, who is one of the co-founders of, one of the founders of Astika Kumbhak, conducting all the consumer wellness programs through Kumbhak therapy. So sir would be explaining you about how Kumbhak therapy works and this and that at an overall level. And then we'll experience Kumbhak therapy itself and its phenomena. Over to you, sir. नमस्कार, good evening. Can you hear me? क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? Yeah, just give me a thumbs up if you can hear me. तो बीमारी क्यों आई? हम लेवल की तरफ देखने लगे और लाइफ की तरफ देखना बंद कर दिया. लाइफ से पार्टिसिपेशन खत्म हो गया. So if you can, और उस लेवल ने डिसाइड किया whether you had a problem or not, right? Otherwise तो पता भी नहीं था. और अगर पता नहीं होता तो you would have just gone through life also. You know, some bloating is happening, some weight is getting increased. I do not know, but now you also have information. Oh, if this is happening, it must be this. Oh, if this is happening, it must be this. So, and that scared everyone. Even right now, if you notice, there is one virus which might have been there ever for all, you know, but all the information scaring the hell out of people. We have stopped participating. So let's start by beginning our participation. If you can put on your cameras, it'll be wonderful. You can sit comfortably straight, थोड़ा सीधा बैठे, सिर्फ इस webinar में ही नहीं, even in normal life, when you eat food, when you are watching TV, actually these days you should not be watching TV. Pure rubbish is coming on it, okay? You should not also be on other screens. And if you notice, if you shift your attention from there, there are so many wonderful things happening, okay? The sun is coming out, the birds are chirping, the moon is also coming out. All mornings are good, all evenings are good, all nights are good. Only one piece of information you hear and, you know, your smile suddenly disappears, okay? So we need to change this. We need to change this. Like Ayush very correctly said, I do not know how many of you are really suffering from thyroid, okay? But you're definitely suffering from that pill that you have to take every morning, okay? On top of that, you have to do it on empty stomach. Wow, it makes things worse, okay? And on top of that, आपको बोला गया है पूरी जिंदगी लेना पड़ेगा. This is worse than getting married. You know, at least the other person will bring something to the table. If nothing else, a joke in once in a while, a gift in once in a while. हाँ, और तो और नहीं, अगर हस्बैंड है तो महीने में एक बार सैलरी तो लेकर आएगा ही आएगा, ठीक है?
And agar wife hai, तो I will not comment on that because you know, men can't understand women, so they should not be commenting on them. Okay, तो हम इंग्लिश हिंदी दोनों में बात करेंगे. मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा. माय नेम इज़ नवनीत. वी रन प्रोग्राम्स, ऑनलाइन प्रोग्राम्स. तो ये किसके लिए है? हु इज़ दिस वेबिनार फॉर? आपने अपने पोल में बताया कि सम पीपल आर सफरिंग फ्रॉम हाइपोथायरॉयडिज्म, सम पीपल आर सफरिंग फ्रॉम हाइपरथायरॉयडिज्म, some people also have Hashimoto's या ऑटो इम्यून कंडीशन. ओके, और इसके अलावा जिसको थायराइड कंडीशन शुरू हुआ और बाद में हो सकता है और भी कॉम्प्लिकेशंस आई हो, लाइक somebody might have developed diabetes, somebody might have developed blood pressure, arthritis, okay, and related conditions. तो ये उन सभी के लिए है. This webinar is for everyone. This is an intro webinar for a online course जिसका details हम आपको बाद में बताएंगे. It is a paid for course. So I am telling you in advance so that you don't sound disappointed afterwards. Okay, you should not sound disappointed afterwards. Yeah. So acute thyroiditis, yes, all those who have shared your information with us, thank you so much. This is for everyone. ये सभी के लिए है जो thyroid और उससे related condition में है. For thyroid and related conditions, this webinar is for everyone who's over here. Okay. Now before we proceed further, question number 1. इससे पहले हम आगे बढ़े, सवाल, सबसे पहला सवाल, क्या आपको मालूम है आपको थायराइड क्यों हुआ? Do you know why you got into thyroid? Okay, because if you know that, that means there is a possibility that something can be done about it. If we know the root cause, there is a possibility. But if you do not even know where it started from, for example, somebody might have told you, oh, your you know, thyroid gland is not working well. Somebody might have told you something else, but there can be many reasons for you to get into these conditions or to experience the symptoms of this condition. It is important to know वो क्या है, because जब तक वो नहीं पता चलेगा हम भी उसका कुछ नहीं कर सकते, हमें सिर्फ गोली ही खानी पड़ेगी. Yes, hormonal balance है. Then question again, why is the hormonal balance coming into your system? Okay. Yes, genetics is a very easy way to blame your parents or whatever. But if you notice, if genetics was true, then everyone in the family should have got thyroid. But only 1 or 2 people got. Not everyone gets that. So there might be a relation, but we have to see that whether there is a direct relation or not. And some 100, 200 years back, I don't think anyone experienced thyroid. So we are what you call, you know, the future generations of the same people. Okay. So how come suddenly genetics? Okay. So in any case, we'll not get into that. So question number 1, why you got into this condition? Okay. If we are able to find that out, it means हम उसका इलाज कर सकते हैं. There is a possibility. Secondly, whatever you might be trying, whether it is allopathy, whether it is some form of yoga, pranayam, some form of exercise or diet plan, you will notice that the industrial revolution is still continuing, which is what? One size fits everyone. Okay, everyone is different. Every human system is unique. So how come same medicine, same kind of problem, same kind of solutions for everyone? Okay, which is why people continue to suffer. कुछ भी आप उनको करा दीजिए, वो suffering शुरू रहती है. As far as stress is concerned, many people are saying stress. Well, if right now there was an earthquake, right now if there was an earthquake, some of us will get scared. Okay, some might even faint. I do not know who. Okay, some will you know, take precaution. Some will take precaution. Okay, सब चीजें ठीक हैं. They might even worry about other people, कि everyone is safe or not. Okay, some will be even crazy enough to make videos. Okay, hey, look at the fan, you know how it is shaking. So it is the same earthquake, different reactions. So where is the stress? Is it outside? Okay, so that is a different topic. I'll stop over here. Now, question, I have given you 2 questions. Number 1, why is it happening to you? Number 2, why standardization? Okay. Now there must be questions from your side. Like somebody said, please tell us about Kumbhak.
So you may have heard of this word kumbhak, you may not have heard of this word kumbhak. Some of you might have heard, those of you who are doing some kind of pranayama or yoga might have heard its mention in Rechak or Purak, but let me tell you, it is none of that. Okay, the purpose of yoga, pranayama is different. The purpose of what we are doing is very, very different. In fact, it is diametrically opposite. वो बिल्कुल ही उससे अलग है. Okay, we will tell you how that is. So to tell us about Kumbhak, what is Kumbhak? Okay, Mituya Sachdev ji, no problems. If you've never heard, we'll make you hear Kumbhak so many times that Kumbhak will become the new Chumbhak for many people. Okay. तो हम आगे चलते हैं to tell us about what Kumbhak is. And you know, fantastic thing is, आप सभी लोग इसको इस्तेमाल करते हैं. You do it on a daily basis. You use it on a daily basis. You just don't. You are not aware of it. Okay. आप जाने अनजाने में यूज करते हैं. अगर आप इसको आपको तरीका पता चल जाए इसको कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं to achieve more than what you are already using it for, you can come out of this condition. Not just thyroid but any kind of chronic ailments. Okay, they come from inside. ये अंदर से आई हैं तो हमें अपने अंदर काम करना पड़ेगा. बाहर काम करने से कोई फायदा नहीं होगा. Okay, so I'll stop over here. I'll hand over the session to Swami Raj Vibhu. Just a small introduction. While he's a normal person like you and me, but he's also got exceptional qualities. How do these qualities come about? These qualities come about if somebody strives for something. Okay, if you are looking for something, if you really strive for it, you will realize that these qualities are not available in any book. They are not available in any text or scripture. They come to you if you strive for them, if you work hard, if you not work hard, if you work in the right direction, if you have the right kind of perspective and the right kind of observation. So he's a rare Kumbhak yogi, which is why he's able to offer customized Kumbhak methods to every participant that comes in our program. Okay, and we also offered Kumbhak for Corona, to handle Corona, etc. in the last 1 year. Many people used it and have benefited. Families like they benefited from it. All kinds of conditions, Jani Krishna, any chronic ailments, 70% of the ailments are chronic ailments. I'm not talking of infections. So we'll stop over here. Later on, we can take questions and answers from you. So I'll hand over the session to Swami Raj Vibhu. Am I audible? Am I audible? आवाज आ रही है? Right. So what is my responsibility? My responsibility is that you open your eyes and see things clearly. मेरी जिम्मेदारी क्या है कि आपकी आंखें खोली जाएं, आप चीजों को ठीक ठीक देख सकें. And whatever decision you take in your life, जो आप decide करते हैं अपने जीवन में जो करते हैं, that is your freedom and responsibility. वो आपकी आजादी है और आपकी responsibility. So what I'll do here, I'll tell you a little, try to open your eyes, tell you a little perspective, the right perspective of diabetes. एक सही दिशा में मैं आपको ले जाने की कोशिश करूंगा. I'll talk in both the languages, English and Hindi. दोनों भाषाओं में बात करने वाला हूं मैं. जो भी whatever your language of comfort, just catch that. जो भी आपको अच्छे से समझ में आता है वो आप पकड़ें. So I'll give you a little perspective and I'll talk about the solution. मैं आपको दिखाऊंगा ये है क्या, ये प्रॉब्लम क्या है और क्या इसका सॉल्यूशन है. And in the end, आखिर में हम एक कुंभक का मेथड करेंगे. In the end, we will do one कुंभक method. So we are talking about lot of things. बहुत सारी चीजें बात कर रहे हैं. स्ट्रेस से होता है, जेनेटिक्स होता है, तो ठीक क्यों नहीं कर लेते? Observation is not intelligence, not a solution. इतनी बड़ी बड़ी मशीनें बना ली ना ऑब्जर्वेशन के लिए. lot of machines have been made to observe, but where is the solution? Solution कहाँ? Tell me one thyroid person who has come out of thyroid by taking medicine. दवाई खा के थायराइड से बाहर निकल गया, became fine. So let us understand it in a very simple way.
So in the most simplest way, I'll make you understand. इतना तो समझते हैं ना, अंदर कुछ कमजोर हो गया. Your thyroid has become weak, at least for the time being. अभी के लिए इतना समझते हैं, so that we can actually look at some solution. Thyroid weak हो गया ना, what is the solution? If you eat that thyroxine, that is T4, synthetic T4 खा रहे हैं आप, tetrahydrothyronine खा रहे हैं रोज, synthetic T4. Your numbers are not proper, numbers नहीं है, markers ठीक नहीं है, कुछ गोली खा के marker ठीक कर लो, फिर ठीक हो जाएगा thyroid. Is it empowering your thyroid? क्या वो गोली आपके thyroid को ठीक कर रही है? नहीं कर रही ना, आपके नंबर को दिखा रही है केवल, थोड़ा ठीक आ रहा है. But anybody has come out of their symptom? Symptom कम हुआ, symptom भी खत्म नहीं. Will you not get into future problem? क्या आगे चल के प्रॉब्लम नहीं होगी? बिल्कुल होगी, आगे चल के प्रॉब्लम होगी, रोक नहीं सकते, दवाई खाओगे तो भी होगी. All the future problem will. So putting in some T4 and getting a right number, कुछ T4 खा के ठीक नंबर लेके आ जाना, this is not a solution. You are not empowering your internal mechanism, internal functioning. आप अंदर जो काम हो रहा है उसको empower नहीं कर रहे, powerful नहीं बना रहे. तो get it very clear, this is not a solution. ये कोई solution नहीं. थायराइड के बारे में दूसरा पर्सपेक्टिव बताता हूं. आई एम टेलिंग यू अ लिटिल डिफरेंट पर्सपेक्टिव ऑफ थायराइड. ठीक है, व्हाट इज थायराइड प्रॉब्लम? सो व्हाट वी कॉल एज द बॉडी, इसका स्ट्रक्चर होता है ना, यू हैव टू मेंटेन द स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी. इस बॉडी का स्ट्रक्चर मेंटेन करना चाहिए ना हमको, तभी ये ठीक रह पाए. स्ट्रक्चरल पार्ट, ऑर्गन जो होता है वो स्ट्रक्चर है. हार्ट इज अ स्ट्रक्चर, एवरीथिंग, एवरी ऑर्गन इज अ स्ट्रक्चर. ये स्ट्रक्चर कैसे बनता, हाउ डज दिस स्ट्रक्चर गेट्स मेड? You need a little protein. आपको थोड़ा प्रोटीन चाहिए. Do you understand protein? Has anybody seen protein? किसी ने देखा प्रोटीन? You're talking about protein, but basically nobody knows what is protein. Carbohydrate देखा किसी ने? किसी ने carbohydrate देखा? Has anybody seen carbohydrate? नहीं? You have not seen. You try to correlate. Okay, does your body knows carbohydrate? कभी सुबह उठ के has your body said, every morning you get up and your body says I need 50 kilocalorie carbohydrate? ऐसा बोला कभी? नहीं बोला. ये body doesn't know carbohydrate. What does it know? What does it know? क्या जानता है? I want to eat something sweet. I want to eat something fat. खाने का मन कर रहा है, कुछ मीठा खाने का मन कर रहा है, ये जानता है आपका बॉडी. बट मीठा खाने का मन करता है तो आप चॉकलेट दे देते हो ना. There is something wrong happening. Your body knows what is its medicine, but you are giving something wrong. अच्छा ठीक है, आगे चलता. What is then thyroid issue? What is then thyroid? This structure, ये structure है ना, इसके लिए जो प्रोटीन चाहिए, the protein that is required for this structure, you are not able to metabolize protein. ध्यान से सुनिए, मैं सारी प्रूव करूंगा इसको. मैं इसे प्रूव करूंगा. प्रूव है यार. इफ यू लिसन टू मी अ लिटिल केयरफुली, यू विल गेट टू नो व्हाट इज योर प्रॉब्लम. एट लीस्ट यू विल गेट टू नो. व्हाट यू डू विद इट, इट्स योर चॉइस. सो प्रोटीन मेटाबॉलिज्म आप नहीं कर पा रहे, इस्तेमाल नहीं कर पा रहे प्रोटीन, और यू हैव बिकम एलर्जिक टू प्रोटीन. व्हाट इज मेटाबॉलिज्म? व्हाट इज मेटाबॉलिज्म? नाम तो सुना आपने, बहुत कुछ जानते हैं इस मेटाबॉलिज्म. एफिशिएंसी ऑफ यूटिलाइजेशन, इस्तेमाल करने की क्षमता, एबिलिटी टू यूटिलाइज इज कॉल्ड एज मेटाबॉलिज्म. सो आर यू एबल, इफ यू आर नॉट एबल टू मेटाबोलाइज प्रोटीन, अगर आप प्रोटीन को इस्तेमाल नहीं कर पा रहे, so you have lost the strength of utilizing protein or you have developed an allergy to protein. ये दो में से एक चीज है. You have lost the strength to utilize protein or you have become allergic to protein. और वो भी कारण एक इसमें से है कि we are consuming lot of protein in the last 25 years.
ह्यूमन पॉपुलेशन इज कंज्यूमिंग प्रोटीन बियॉन्ड देयर रिक्वायरमेंट. कोई चीज अगर आपको कम चाहिए वो ज्यादा दे दोगे ना तो योर बॉडी विल डेवलप एन एलर्जी टू इट. ठीक है. सो क्या प्रॉब्लम है? प्रोटीन मेटाबॉलिज्म वीक हो गया. रिलेट करें इसको. You must have heard of these words called enzymes, hormones. What is the T3, T4, TSH? ये क्या है? Hormones. ऐसे नाम सुने होंगे आपने, देखा नहीं होगा कुछ भी, मगर नाम सुना होगा. Hormones, enzymes, steroids, है ना? ऐसा कुछ सुना होगा. So hormones and enzymes. ये क्या है? What are these? These are some protein. कुछ प्रोटीन है ये प्रोटीन से ही बनते हैं, मेड फ्रॉम प्रोटीन. ठीक है. सो व्हाट इज योर T3, T4, TSH? दे आर सम काइंड ऑफ प्रोटीन. आपका प्रोटीन मेटाबॉलिज्म वीक है. योर प्रोटीन मेटाबॉलिज्म इज वीक. दैट इज व्हाई मार्कर्स आर वेरिंग. आप प्रोटीन ठीक से मेटाबोलाइज नहीं कर रहे हो, नहीं बना पा रहे हो. देन you know insulin. Have you heard of this word called insulin? सुना तो होगा कम से कम, देखा तो नहीं होगा, सुना होगा. insulin, what is that? That is also protein. hormone, that is also hormone. There are many. देखो अभी हम सब कुछ नहीं जानते बॉडी के बारे में. How much we know about this body? 1%, 1% जानते. But we are taking decisions just by knowing 1%. ये बड़ी बेवकूफी है. So whatever we will do wrong. तो क्या है? इंसुलिन क्या है? हार्मोन. हार्मोन क्या होते हैं? They are made from protein. You are not able to make protein. How many people have got on to diabetes after their thyroid issue? कितने लोगों को डायबिटीज हो गया? शुगर किनके हाई हो रहे हैं? आप में से कई होंगे जिनके शुगर हाई हो रहे हैं. There might be many people, isn't it? So why you are getting, why thyroid people are getting into diabetes? Because they are not able to metabolize protein. Insulin नहीं फॉर्म होगा properly, है ना? इंसुलिन नहीं होगा तो you'll have high sugar levels. मैं कोरिलेट कर रहा हूं, अगर समझेंगे तो ठीक है, नहीं समझेंगे तो your choice. Okay, so many people are getting into high sugar level, or if you are not getting now, you will get it later on in your life. कुछ सालों बाद होगा, अभी नहीं हुआ है तो कुछ समय बाद होगा. It doesn't matter you are taking a pill, कोई फर्क नहीं पड़ता, you will get into it. So people into thyroid issue get into high sugar level. दूसरा, why they are not able to metabolize protein. Now what does this protein does? उसको कैरी करता. This protein carries glucose from blood to other areas, to tissues. तो प्रोटीन इज ऑल्सो कैरियर, ये कैरी करता. सो योर ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म इज वीक. ट्रांसपोर्ट इज वीक. कितने लोगों को कॉन्स्टिपेशन हो रहा है? हाउ मेनी पीपल गेटिंग कॉन्स्टिपेशन? इट इज नॉट गेटिंग ट्रांसपोर्टेड, इजंट इट? ट्रांसपोर्ट ठीक नहीं है, बाहर नहीं निकल पा रहा ठीक से. ड्राइनेस ऑफ स्किन, कितने लोगों को ड्राइनेस हो रहा है? वाटर ट्रांसपोर्ट नॉट प्रॉपर. वाटर ट्रांसपोर्ट नहीं हो रहा. How many people getting into weight issues? कितने लोगों को weight issues हो रहा है? Fat deposition, water retention, material retention, fat retention. Transport नहीं हो रहा ना, ट्रांसपोर्ट नहीं हो पा रहा. ट्रांसपोर्ट नहीं हो रहा तो जमा रहेगा. आप कुछ भी करो वो जमेगा, वो ठीक नहीं होता. थोड़ा कम कर लो फिर जम जाएगा. You do lot of exercise, again it will come back. तो एक्सरसाइज करके सॉल्यूशन नहीं मिलेगा. You need to improve the transportation. प्रोटीन मेटाबॉलिज्म होगा तो ट्रांसपोर्ट प्रॉपर, और ट्रांसपोर्ट नहीं होता तो व्हाट डज द बॉडी डज? व्हाट डज द बॉडी डू? ट्रांसपोर्ट प्रॉपर नहीं होगा. इफ योर किचन सिंक गेट्स ब्लॉक्ड, किचन सिंक ब्लॉक हो गया, हाउ डू यू क्लियर इट? कैसे क्लियर करते हैं इसको? आप करते हैं ना? इफ किचन सिंक गेट्स ब्लॉक्ड, कैसे करते हैं? हाउ डू यू ओपन इट? यू अप्लाई प्रेशर. जोर लगाते हैं ना किसी चीज से, यू अप्लाई प्रेशर, isn't it? So if transportation is not happening properly, ट्रांसपोर्ट ठीक से नहीं हो रहा, योर बॉडी विल अप्लाई प्रेशर. आपका बॉडी अप्लाई करेगा प्रेशर. कितने लोगों को ब्लड प्रेशर हाई है? हाउ मेनी पीपल आर गेटिंग ब्लड प्रेशर इश्यूज? हो रहा है.
Why? Your body is applying pressure, क्योंकि ट्रांसपोर्ट नहीं हो रहा. It wants the transport. Otherwise, how will your organs get the nutrition? Organ को nutrition कैसा मिलेगा? If the transport is not proper, है ना? So organ nutrition नहीं मिलता है, and the flow is not proper. Flow is not proper. Organ is not getting nutrition. They'll become weak. So your nervous system will become weak. कितने लोगों को एंजाइटी हो रहा है, डिप्रेशन हो रहा है, मेंटल इश्यूज, मेंटल फ्लक्चुएशन? हाउ मेनी पीपल आर गेटिंग इनटू नर्वस इश्यूज? ट्रैकीकार्डिया, ब्रेडिकार्डिया, हार्ट इज नॉट एबल टू फंक्शन प्रॉपर्ली. तेज हो जाता है, बीट तेज हो जाते हैं. व्हाई योर हार्ट बीट बिकम्स फास्ट? बिकॉज इट वांट्स टू ट्रांसपोर्ट. वो ज्यादा ट्रांसपोर्ट करने की कोशिश कर रहा है ना. हेयर फॉल कितने को? हाउ मेनी पीपल हेयर फॉल? कितने लोगों को हेयर फॉल हो रहा है? हाउ मेनी पीपल फेसिंग हेयर फॉल? Why you are facing hair fall? Water is not getting transported to your scalp. बाल की जड़ में पानी नहीं जा रहा, न्यूट्रिशन नहीं जा रहा. The hair follicles have the shortest living stem cells. उनमें सबसे कम टाइम रहने वाले स्टेम सेल्स होते हैं. It needs nutrition. It needs nutrition to grow, and it needs water to be stable. आप एक छोटा सा पौधा लगाएं गमले में. Put a small plant in a small vase. मिट्टी डाल के. Let it dry in the sun. इसको सूखने दे. पानी नहीं डालना, सूखने दो उसको. It will develop cracks. Cracks आ जाएंगे मिट्टी में. वो प्लांट गिर जाएगा. So water transport not happening. Nutrition is not going to the hair. It will fall. गिरेगा ना वो. Dry skin. कितने लोगों को dry skin हो रहा है? Now, if your body is do not have that energy production नहीं हो रहा body में इतना, ठीक है? Nutrients नहीं मिल रहा है. So your body actually protects itself by raising heat. Heat issues आते हैं ना, आप लोगों को जलन होता है ना हाथ पांव में, burning sensation. So body increases heat to reduce that heat. You'll not be able to handle heat. Heat को handle नहीं कर पाएंगे. To reduce the heat, what does the body do? Body क्या करता है? पसीना निकालता है ना, sweating. कुछ लोगों को स्वेटिंग हो रहा ना. Burning and tingling sensation. Tingling because of nervous system. The end point of nerve, which is on skin. वहां पे tingling हो रहा है. Right? So, मैंने तो सारा कुछ आपको बता दिया. I correlated everything. And you can correlate other things also. आप दूसरी चीजों को भी correlate कर लें. Where is the root? What is the root cause? Protein metabolism नहीं हो रहा. Protein metabolism not happening. You lost the strength of protein metabolism. प्रोटीन को इस्तेमाल करने की जो आपकी क्षमता है वो कम हो गई है. Why it is happening to females more? Females, ladies में क्यों ज्यादा होता है? Males में भी होता है, but कम in proportion. It is less in males, more in females. Why? Because in females, औरतों में प्रोटीन मेटाबॉलिज्म ज्यादा सेंसिटिव होता है. It is more sensitive in females. Why? They have been given an added responsibility of bearing a baby. एक बेबी बनाना है तो प्रोटीन तो मेटाबोलाइज ठीक से करना पड़ेगा. So the protein metabolic ecosystem is sensitive in females. तो जरा सा भी गड़बड़ाएगी उनके अंदर प्रॉब्लम दिखेगी ज्यादा. Not that it is not happening in males, but females are facing the brunt of it. उनमें सिम्टम बहुत जल्दी आता है. Right? Hormonal imbalance, menstrual issue. How many ladies facing that? Menstrual issue, hormonal imbalance. Infertility issues is rising. What are hormones? क्या बताया? What are hormones? They are proteins. If your protein metabolism becomes weak, your hormone level will vary, will fluctuate. Hormonal imbalance आएगा, menstrual issue आएगा. The flow is not proper. ठीक है? So I have correlated. This was just a little attempt to correlate what I'm saying. आप उसे समझ पाएं, अपने साथ जोड़ पाएं. Correlate with yourself, with your symptoms. This is something that I did. ये मैंने किया आपको.
What is the solution then? Why it has become weak inside you? आपके अंदर क्यों कमजोर हो गया प्रोटीन मेटाबॉलिज्म? This is the real question. It is not just thyroid. Protein metabolism में thyroid is just one organ that participates. Protein metabolic ecosystem में thyroid एक organ है जो participate करता है. It is pituitary. Your TSH is released by pituitary, not thyroid. Pituitary gland, liver में T4, T3 में convert होता है. From T4 it converts to T3 in liver. Your body utilizes T3. तो जितना भी आप ये सिंथेटिक T4 खाओगे ना, आपका लिवर जाता जाएगा. It will go off. So liver, adrenal gland, and lot of other things. Lot of many other hormones and enzymes participate in this protein metabolism. केवल thyroid नहीं है, केवल thyroid का issue नहीं है ये. So why it has become weak? ये क्यों weak हो गया? इसके बारे में हम बात करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं. I want to ask one question before this. Who designed your body? If you don't understand your body, how will you correct it? थोड़ा समझना पड़ेगा ना इसको. So who designed your body? Which doctor, which lab, which scientist designed human body? आपका शरीर किसने डिजाइन किया? आप जानते हैं नाम उसका? जानते हैं तो लिखिए नीचे कुछ चैट बॉक्स में. Just write, type down something, whatever you think designed your body. So most of the people are saying God. ज्यादातर लोग क्या बोल रहे हैं? God. इसका मतलब क्या है? आप ये बोल रहे हैं कि we don't know. You are saying we don't know, but you don't have that courage to say that, so you are putting the onus for something else, है ना? Passing the buck. अपनी जिम्मेदारी किसी के ऊपर डाल दो. Now nobody knows God for sure. When you say God, you basically are saying I don't know. ठीक है, इस बात को जरा ध्यान से एक्सेप्ट कर लें. कभी गॉड को चाय पिलाया आपने? तो आप जानते नहीं इसका मतलब. You don't know him. तो एड्रेस ढूंढ के लाइए पहले तो. So when you say God, you want to say I don't know. और मैं अब ये प्रूव करना चाहता हूं. I want to prove that you know. Your education is preventing you to see. आपके एजुकेशन रोक रहा है देखने से. You know who designed you. आप जानते हैं कि आपको किसने डिजाइन किया. That is what I will prove. यही मैं अभी प्रूव करूंगा. So if there is an African in this webinar, एक अफ्रीकन अगर कोई ज्वाइन करता है इस वेबिनार को, the moment you see him or her, what do you say? आप क्या कहते हैं? Oh, African. क्या देख के कहा? Have you seen the ID card? Just by looking at a body, you know who designed that body. Chinese, Northeast, South Indian. आप तो सब जानते हैं. So when you say African, who designed his body? Africa. How do you correlate? कैसे correlate करते हैं? जब अफ्रीकन कह रहे हैं इसका मतलब अफ्रीका ने डिजाइन किया उसकी बॉडी को. What is Africa? Africa is an environment. एक तरीके का वातावरण है. So who designed his body? An environment. एक वातावरण ने डिजाइन किया. एक region. Yes, region. Regional environment. Environment designed your body, isn't it? आप जानते हैं, देखना नहीं चाहते. किसी ने आपको कुछ पढ़ा दिया, आप वही बोलते हैं. Your education is preventing you from seeing the real things. असलियत देखने से ना आपका एजुकेशन प्रिवेंट कर रहा है, रोक रहा है आपको. आप ज्यादा इंटेलिजेंट है. यू आर नॉट यूजिंग योर इंटेलिजेंस, यू आर यूजिंग योर इंफॉर्मेशन. दैट इज प्रॉब्लम. आप अपना इंटेलिजेंस नहीं यूज कर रहे, आप अपना इंफॉर्मेशन यूज कर रहे हैं जो गैदर किया है आपने बचपन से लेके. इट डजंट सर्व एनी पर्पस. सो नेचर डिजाइन और एनवायरमेंट डिजाइन योर बॉडी. So what is it designed towards? इसका मैनुअल फिर क्या हुआ? What is the design towards? कैसा है इसका डिजाइन? Natural food, natural surrounding. So natural food. Just look at what you are eating from morning till evening. सुबह से लेके शाम तक क्या खा रहे हैं?
ऑल्टर्ड फूड, नेचुरल नहीं खाते आप, ऑल्टर्ड फूड, कुक्ड, प्रोसेस्ड, पैकेज, जेनेटिकली मॉडिफाइड. What you are eating is altered food. ठीक है. Second thing, you don't even want to touch earth. मालूम है ना आपको, पृथ्वी से एलर्जी हो गई है आपको, आप जूते पहन के रखते हैं, पांव भी जमीन पे नहीं लगने चाहिए, है ना. The thing which has given you birth, जिसकी वजह से आप पैदा हो गए, उससे एलर्जी हो गई, मां से एलर्जी हो गई. You have altered the environment. 80% of plants and animal species has become extinct from the very face of earth. पृथ्वी से 80% जीव जंतु पेड़ पौधे मार दिया हमने, खत्म कर दिया. एयर गॉट पोल्यूटेड, पोल्यूशन हो गया ना, हर चीज खराब हो गई. एयर गॉट पोल्यूटेड. वेयर इज द वाटर गॉन? पानी कहां गया? आपके जमीन पांव के नीचे पानी कितना नीचे है? From 20 to 50 feet to 5,000, 10,000 feet. Where have your ponds and lakes and rivers gone? पानी कहां गया? Altered environment. We are living in, what we are doing? Altered food, altered environment. अब जरा ध्यान से बताइए मुझे, is your body designed for medicine, reductionist, chemical, allopathic medicine? क्या आपका शरीर दवाइयों के लिए डिजाइन हुआ है? No, not at all. 50 साल में ही तो दवाइयां आई हैं. In the last 50 years, medicines have come. Chemical medicine. Otherwise, this body is surviving for millions of years. लाखों करोड़ों साल से ये शरीर सर्वाइव कर रहा है. इसका सर्वाइवल तो पिछले 50 सालों में डिफिकल्ट हुआ है ना. It has become difficult in the last 50 years. Your body was not designed for medicine. आपका शरीर मेडिसिन के लिए डिजाइन नहीं हुआ. तो आप मुझे एक बात बताइए, आपके पास में एक पेट्रोल की गाड़ी है, यू हैव अ पेट्रोल व्हीकल, विल यू रन इट ऑन केरोसिन एंड डीजल? उसमें केरोसिन और डीजल डाल के चलाएंगे क्या? नहीं चलाएंगे ना. व्हाई? बिकॉज द इंजन इज नॉट डिजाइन फॉर अदर फ्यूल, इट इज डिजाइन फॉर पेट्रोल. बट जब ये बॉडी की बात आती है, then this common sense, where does it go? ये कॉमन सेंस कहां चला जाता है? Your body is not designed for altered food. Your body is not designed for altered environment. Your body is not designed for medicine. तो प्रॉब्लम तो आएगी ना. So what has happened? क्या हो गया? जरा अपने एक स्टेप पीछे पूर्वज को देखो. दादा दादी, नाना नानी, somebody like them. Your ability to work and their ability to work कहां पे है दोनों में? क्या कंपेयर करिए जरा. Their ability to work was high. Your ability to work is low. औरतें 7-7, 8-8 घड़े पानी सिर पे ढो लेती थी. Will you be able to bear even one? Your ability to work has come down ना. You have progressed or digressed. क्या हुआ? प्रोग्रेशन हुआ है, डिग्रेशन हुआ, नीचे गया ना. फिजिकल एबिलिटी कम हो गई ना. 80% लॉस हो गया. आपके फिजिकल एबिलिटी कम हो गई, राइट? अच्छा, नॉट ओनली फिजिकल एबिलिटी, योर इंटरनल एबिलिटी हैज कम डाउन. अंदर की क्षमता कम हो गई है. 70% ऑफ डिजीज इज क्रॉनिक, दैट मींस इट इज कमिंग फ्रॉम इनसाइड, अंदर से आ रहा है. सो आप अंदर की कैपेबिलिटी कम हो गई है ना. फिजिकल कैपेबिलिटी भी कम हो गई है. दिस फिजिकल, और इसी कहते हैं वॉलंटरी कैपेबिलिटी. फिजिकल कैपेबिलिटी और वॉलंटरी कैपेबिलिटी कम हो गया ना. सो योर इनवॉलंटरी फंक्शंस आल्सो हैव कम डाउन. इनवॉलंटरी कैपेबिलिटी कम. हार्ट के फंक्शन की कैपेबिलिटी कम हो गई है ना. लिवर फंक्शन, थायराइड फंक्शन, दिस इज व्हाट यू आर फेसिंग. यही तो प्रॉब्लम आ रही है ना. इंटरनल कैपेबिलिटी हैज गॉन डाउन. व्हाट आर यू डूइंग to improve the internal capability? The most important question, what are you doing to increase the internal capability? अंदरूनी क्षमता बढ़ाने के लिए आप कर क्या रहे हैं? So मैं आपकी थोड़ी भ्रांतियां तोड़ता हूं. हाँ, तोड़ू? एक्सरसाइज से नहीं होता ये. This doesn't happen with exercise. So do you know sports people also get into hypothyroid or thyroid condition, diabetes condition? sports के लोगों को भी होता है, मालूम है आपको? तो क्या ये एक्सरसाइज से ठीक हो जाएगा? नहीं, चांस कम है.
although exercise is a support, exercise support होता, it is good to do exercise, but it may not empower your thyroid. It may not empower your heart or lung or kidney. Moreover, you have lost the capability of doing exercise. इसके ऊपर ये कि आपको एक्सरसाइज रेजिम डाल देना, थोड़े ही दिन में ड्रॉप हो जाएगा. Then what? Improve your food. Food ठीक ठाक कर लें तो हो जाएगा ठीक? No, 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 no. It will support. वो आपको सपोर्ट देगा, फर्दर डिटीरिएट होने से बचा सकता है, मगर जरूरी वो भी नहीं है. इट विल बी अ सपोर्ट. वो सपोर्ट होगा. फूड ठीक करने से सपोर्ट होगा. तो एक्सरसाइज करने से ठीक नहीं होगा, फूड देने से नहीं होगा. एनीथिंग एक्सटर्नल, दैट मीन्स मेडिसिन से ठीक नहीं होगा. Nobody has empowered their thyroid by taking in medicine. मेडिसिन लेके कोई भी ऑर्गन ठीक नहीं हुआ. नहीं तो इतना मेडिसिन ले रहे हैं, more medicine, more disease have come. It will not empower your interiority. भ्रांतियां तोड़ी थोड़ी. So it will not happen by taking anything from outside, not doing exercise or physical activity or yoga. कैसे होगा फिर? We want to do that. वही हम करना चाह रहे हैं. तो आपको बताऊं मैं, you want to know कैसे होगा? You really want to know कैसे होगा? How will it happen? How can you empower your interiority? You really want to know? तो बताता हूं अभी. तो what is the solution? You have to empower your thyroid, or you have to improve your thyroid function. एक सिंपल तरीके से समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है? अब मुझे बताइए, how many people here have their right hand strong? कितने लोगों का दायां हाथ स्ट्रांग है? Lift your right hand. और कितने लोगों का बायां हाथ स्ट्रांग? How many people have left hand strong? So who did it? किसने किया? This was not the case when you were born. जब पैदा हुए तब तो ऐसा नहीं था. You did it. आपने किया? आपने ही किया. You have done it. So you have made one limb more strong than the other. आपने एक लिम्ब को दूसरे से ज्यादा स्ट्रांग बना दिया. आप जानना नहीं चाहेंगे कैसे कर दिया? How did you do it? अगर आपने एक लिम्ब को स्ट्रांग बनाया बाहर, तो अंदर भी थायराइड को स्ट्रांग कर सकते हैं. You just don't know how. So how did you make one limb strong? कैसे स्ट्रांग किया इसको? ये हम देखते हैं. So what is the strength creating mechanism of this body? शरीर का स्ट्रेंथ बनाने का तरीका क्या है? जरा देखें. So you do this experiment with me. मेरे साथ में एक्सपेरिमेंट करेंगे. मेरे साथ में एक्सपेरिमेंट करेंगे. By using, of course, by using it, but how? On using your limb, what happened? हुआ क्या? आप सही क्वेश्चन पूछेंगे, आपको सही आंसर मिलेगा. If you ask the right question, you'll get to a solution. So keep your left palm like this. अपना बाएं हथेली को ऐसे रखें. Make a fist from the right hand. दाएं हाथ से मुट्ठी बांधें और जरा स्ट्रेंथ क्रिएट करें. जरा जोर लगाएं. जरा. Make lot of effort. Push the left palm very hard. जोर लगा रहे हैं ना. You are creating strength. शक्ति पैदा कर रहे हैं. How are you creating this strength? ये स्ट्रेंथ कैसे पैदा कर रहा है? Again, your education might be stopping you to see the right thing. मगर आप जानते हैं how. You know how. You are not looking there. देख नहीं रहे. मुझे मालूम है आप उधर देख नहीं रहे. So let's do it again. Wherever I am indicating, look there. जहां भी मैं बताऊंगा वहां देखना. ठीक है? Just push it hard. जितना जोर से पुश कर सके करें. See, the more hard you want to push, the more you have to hold your breath. जितना जोर लगाना चाहते हैं उतनी सांस रोकनी पड़ती है. Yes or no? करके देखें. किसी भारी चीज को धक्का दिया. Have you pushed anything heavy? How do you do it? By holding your breath more. खींचते कैसे? खींचते क्या? How do you pull? So clasp your fingers. उंगलियों को फंसा लें. And try to pull. खींचे. Pull in opposite direction. खींचे. How do you pull? कैसे खींचते हैं? By holding your breath. By holding your breath.
रस्साकस्सी खेली है कभी? टग ऑफ वॉर कैसे करते? किसी इंसान को खींचा है, किसी को खींच के देखें. यू होल्ड योर ब्रेथ टू पुल मोर. जोर लगाते कैसे हैं आप? बाय होल्डिंग योर ब्रेथ. यू क्रिएट एफर्ट, यू क्रिएट स्ट्रेंथ. वॉट एवर यू डू थ्रू आउट द डे, पूरे दिन में जो कुछ भी करते हैं आप, वॉकिंग, जॉगिंग, योगा, जुम्बा, एरोबिक्स, क्लाइंबिंग स्टेयरकेसेस, डूइंग हाउस होल्ड वर्क, शरीर जब भी हिलाते हैं आप, हाउ डू यू रेगुलेट द मूवमेंट? बाय होल्डिंग द ब्रेथ इन वेरिएबल प्रोपोर्शन बिहाइंड. अलग अलग अनुपात में सांस रोक के आप एक्टिविटी क्रिएट करते हैं. और द स्ट्रेंथ ऑफ एक्टिविटी, आप अपने वॉलेंट्री फंक्शंस को कैसे रेगुलेट करते हैं? बाय होल्डिंग योर ब्रेथ इन वेरिएबल प्रोपोर्शन. सांस को अलग अलग अनुपात में रोक के. चेयर से भी उठना होगा तो क्या करेंगे? हाउ विल यू गेट अप? व्हाट डिड यू डू? यू हेल्ड योर ब्रेथ अ लिटिल. एवरी मॉर्निंग यू गेट अप एंड yawn and tense your body. अंगड़ाई लेते हैं ना, अंगड़ाई लेते हैं. कैसे लेते हैं? You hold your breath and tense your body. Whatever you do throughout the day, you regulate your voluntary action by holding your breath in variable proportion. Regulator है वो आपकी एक्शन का. अब अपना स्ट्रॉन्ग हैंड ऊपर उठाएं जरा. लिफ्ट योर स्ट्रॉन्ग हैंड अप. Whatever, right or left, whichever. Tense it tight. Tight करें उसे. Tense it tight. You hold your breath and direct it towards one limb. How did you work with that hand? कैसे काम किया उस हाथ से? जब भी काम किया, there was a variable breath hold which went behind. And it got directed towards that hand. उस हाथ की तरफ में डायरेक्शन मिला उसे. एक और एग्जांपल देता हूं to understand it clearly. You know people go to gym and build muscles. लोग जिम जाते हैं, मसल्स बिल्ड करते हैं. How do they build muscles? कैसे मसल बिल्ड करते हैं? They lift weight. वेट लिफ्ट करते हैं ना. अब मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछा ना, हाउ डू दे लिफ्ट वेट? वन थिंग बाय होल्डिंग देयर ब्रेथ, सेकेंड थिंग दे यूज द मसल. अगर दाएं हाथ से करते हैं, दाएं हाथ का मसल इस्तेमाल करेंगे ना. एंड होल्डिंग ऑफ ब्रेथ. सो डायरेक्शन कहां जाता है ब्रेथ होल्ड का? टुवर्ड्स दैट हैंड. और वहां के मसल्स बिल्ड होते हैं, दूसरे हाथ के नहीं होते. अगर एक ही हाथ से उठाएंगे तो उसी हाथ का मसल बिल्ड होगा. इफ यू जस्ट डू वेट एक्सरसाइज विथ वन हैंड, दैट मसल्स विल गेट बिल्ड, बिकॉज ब्रेथ होल्ड तो होगा ही होगा. इवन वॉकिंग यू डू ब्रेथ होल्ड इन डिफरेंट प्रोपोर्शन. आई एम सेइंग प्रोपोर्शन अलग होता है. आपको पता भी, अभी तो पता ही नहीं चल रहा था आपको ब्रेथ होल्ड से कर दो होता है ये. सो इट हैपेंस इन वेरिएबल प्रोपोर्शन, बट विदाउट इट इट कैन नॉट हैपन. एनी वॉलंटरी एक्टिविटी कैन नॉट हैपन. कमाल की बात है ना, अभी तक देखा नहीं, इतनी जिंदगी जी लिए, अपने को ही नहीं जानते. अच्छा, दूसरी चीज तो मैं कहता हूं आप जानते हैं. व्हाट आई एम सेइंग इज यू आर मोर इंटेलिजेंट देन व्हाट यू थिंक. अब ज्यादा बुद्धिमान है जितना सोचते हैं उससे ज्यादा, मगर ध्यान कहीं और लगा हुआ है. सो नाउ अनदर थिंग, इफ यू होल्ड योर ब्रेथ एंड डू नॉट डायरेक्ट इट आउटसाइड, बाहर की तरफ डायरेक्शन ना दें, यानी लिंब को मूव ना करें, वॉलंटरी एक्टिविटी नहीं करें. मेक योरसेल्फ स्टैच्यू. इफ यू होल्ड योर ब्रेथ एंड मेक योरसेल्फ एब्सोल्युटली स्टैच्यू, व्हाट विल हैपन? क्या होगा मालूम है आपको? योर हार्ट बीट विल इंक्रीज, हार्ट रेट बढ़ जाएगा. यू विल स्टार्ट स्वेटिंग आफ्टर सम टाइम. थोड़े समय बाद में स्वेटिंग, पसीना आने लग जाएगा. योर मेटाबॉलिज्म विल राइज, योर हीट इन द बॉडी विल राइज. यानी बाहर तो कुछ किया नहीं आपने, यू डिडंट डू एनीथिंग आउटसाइड. व्हाट हैपेंड? इट वर्कड इनवर्ड्स. अंदर की तरफ में डायरेक्शन चला गया. वेयर डिड द डायरेक्शन गो? इनसाइड यू. सो जैसे आप बाहर एक हाथ को स्ट्रॉन्ग करते हैं, यू मेक वन हैंड स्ट्रॉन्ग. कैन यू डायरेक्ट इट इनवर्ड्स एंड मेक योर थायराइड स्ट्रॉन्ग? आप अपने थायराइड को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं अंदर की ओर डायरेक्ट करके. क्या अपने liver को strong? Can you improve your liver function? Can you improve your kidney function? Can you improve your metabolism? Can you improve your nervous function? Can you improve your heart function, lung function? You don't know how, but ये कर सकते हैं ना. ये आपका ही तो मैकेनिज्म है. This is how you are making one limb strong.
but you are giving it an outside direction. इनसाइड डायरेक्शन दें तो अंदर के ऑर्गन स्ट्रांग हो जाएंगे, राइट? दिस इज कुंभक थेरेपी. कैसे डायरेक्शन देना है, दिस इज कुंभक थेरेपी. नाउ ये तो सिंपल तरीके से मैंने आपको समझाने की कोशिश की. हाउ? कम टू द प्रोग्राम. दैट्स व्हाट वी आर सेइंग. यू कैन डू इट ऑन योर ओन. अपने आप नहीं कर सकते, इट विल बी टू रिस्की. इसीलिए तो प्रोग्राम बता रहे हैं. नाउ I'll do a little more explore. थोड़ा सा मैं आपको और बता रहा हूं, थोड़ा सा बता रहा हूं. It is much more profound and complex. तो थोड़ा सा और बता रहा हूं. Then we'll do one कुंभक. उसके बाद एक कुंभक करेंगे, ठीक है ना? उसके बाद एक कुंभक करेंगे. So you know gravity pulls you down. आपको ग्रेविटी नीचे खींचती है. Why do you grow tall? आप ऊपर क्यों ग्रो कर जाते हैं? Why do trees grow up? Trees ऊपर क्यों ग्रो हो जाता है? Why do birds fly? Birds क्यों ऊपर उड़ जाती हैं? Against gravity. So there must be another factor, upward moving factor. जैसे gravity downward moving factor है, so there must be an upward moving factor also, जिसको इस्तेमाल हम कर रहे हैं, right? A buoyant factor, anti gravity factor, है ना? इसको कहते हैं उदाना. We call it उदाना. Have you heard of this word उड़ान, उड़ना, to fly, उड़ना, उड़ान? It has come from this root उदाना. Now, if you are not using this factor properly, अगर आपके शरीर की क्षमता, capacity to use this factor properly has gone down, अगर ये कमजोर हो गई, how will you feel your body? कैसा शरीर लगेगा? Heavy, भारीपना लगेगा शरीर में. You will feel heavy. अगर ये ज्यादा होगा तो you will feel light. अगर ये कम होगा, you are not able to utilize, you will feel heavy. आपके जॉइंट्स में इश्यू आएंगे, जोर आएगा, आपके जॉइंट्स में स्ट्रेस आएगा. You will feel heaviness in your body. Not only in your body, your mind is connected with the body. You will feel heavy in the mind also. What is this state called as? Mind में अगर heaviness आता है तो इसको कहते हैं क्या? What is this state called as? Depression, stress. अभी किसी ने स्ट्रेस बोला था ना, नीचे टाइप किया था स्ट्रेस. यू डोंट इवन नो व्हाट स्ट्रेस इज. आप उसको डिफाइन भी नहीं कर रहे हैं स्ट्रेस को ठीक से, केवल स्ट्रेस वर्ड यूज कर रहे हैं. आई एम डिफाइनिंग इट फॉर यू. जो ऊपर उठने वाला फैक्टर है ना, उसको अगर आप ठीक से इस्तेमाल नहीं कर पाए तो यू फील स्ट्रेस्ड, यू फील डिप्रेस्ड इन द माइंड. स्ट्रेस एंड डिप्रेशन होगा. व्हाट इज द सॉल्यूशन नाउ? अभी तक तो सॉल्यूशन नहीं था ना, केवल स्ट्रेस और डिप्रेशन बोलने से. नाउ व्हाट इज द सॉल्यूशन नाउ? टेल मी. वो उदाना फैक्टर आप बढ़ा लीजिए ना, उसको इस्तेमाल करने की क्षमता. इंक्रीज योर कैपेसिटी टू यूटिलाइज उदाना. यू विल फील लाइट. स्ट्रेस विल गो ऑफ. ठीक है ना? तो आपके अंदर ऐसा कौन सा, देयर आर 84 फैक्टर्स व्हिच मेक्स दिस लाइफ क्रिएटिंग इकोसिस्टम ऑन अर्थ. पृथ्वी पे जीवन निर्माण का जो वातावरण है ना, ऐसे 84 फोर्सेस काम कर रहे हैं और फैक्टर्स काम कर रहे हैं. आपके अंदर कौन सा फैक्टर वीक हो गया? बिकॉज ऑफ विच योर प्रोटीन मेटाबॉलिक इकोसिस्टम हैज बिकम वीक. यही हम डायग्नोज करते हैं. दिस इज व्हाट वी डायग्नोज. यस, वायु जिसे हम कहते हैं, उसे प्राण भी कहते हैं, वायु भी कहते हैं, फैक्टर्स भी कहते हैं. नॉट जस्ट वायुस, दीज आर अग्निज ऑल्सो. उदाना अग्नि. वेयर आर दोस? आपके टेक्स्ट में तो केवल वायु लिखा हुआ है. वी हैव लॉस्ट द होल साइंस समहाउ, है ना? अभी भी हम जानते नहीं है उसको. टेक्स्ट में पूरा साइंस अभी हम, वी हैव लॉस्ट ऑलमोस्ट 94% of the science we have lost. 94 approximately, 92 to 94. 6 से 8% ही बाकी है. So forget about it. इतना तो आपको समझ में आया ना? Whatever I said, you could understand. आप समझ में आया ना आपको? There are 84 factors. There are 84 factors. Not 49. There are 84 factors. This is 84th universe. Now I don't want to go there. Please don't push me that side.
ठीक है ना? Then it will take hours and days and months to explore those dimensions. It is too vast and too vast. There are 84 factors, right? 84 का चक्कर इस कल्चर में आपने सुना होगा कम से कम. So 84 factors in totality. There are 112 factors. So कौन सा फैक्टर आप में वीक हो गया? We do a diagnosis. हम एक डायग्नोसिस करते हैं. We call it प्राण शक्ति diagnosis. उसको क्या कहते हैं? प्राण शक्ति diagnosis. This is one of its kind of a diagnosis in the whole world. पूरी दुनिया में अपने तरीके का इकलौता diagnosis है. We get to the core, the root factor which has become weak in your system. And we design a कुंभक method to strengthen those factors. कुंभक method design करते हैं आपके लिए to strengthen those factors, to strengthen a particular organ which has gone weak. जो organ weak हो गया है उसको strong करने के लिए कुंभक design करते हैं. To strengthen one function which has gone weak. जो function आपके अंदर weak हो गया है वो strong करने के लिए उसको design करते हैं. And what you see is that all the problems which are emanating from there, वो root cause से ही तो सारे problems आए ना. Somebody has got hypothyroidism, somebody has got hyper, किसी को thyroiditis हो गया, किसी को hypo के बाद में somebody has got into diabetes, some people have got into tachycardia, some people have got into liver disorder, kidney disease, heart disease. शुरुआत कहां से हुई है? The root cause. That is where what we diagnose, that is where we want to go. Strengthen those factors and other things along with it. So this method, this therapy is customized for each and every individual. इतने आसानी से ना ये 10 वायु, 5 वायु, 55 वायु, 59 वायु, whatever, it doesn't work like that. ये जो लॉजिक है ना ये लीनियर काम करता है, लाइफ साइक्लिकल काम करती है, संसारा. So this is Kumbhak therapy all about. This is not yoga. Yoga नहीं है ये. Let me tell you clearly, this is not yoga, not pranayam. क्यों नहीं है? Why it is not yoga? What is yoga meant towards? What is the result, ultimate result of yoga? कोई भी योगा का टेक्स्ट उठा लीजिए. Pick up any yoga text. योगा की जो फैक्ट्री है ना उसका प्रोडक्ट क्या है जरा पता लगाइए. What happens with yoga? मुक्ति, मोक्ष, निर्वाणा, कैवल्य, सेल्फ रियलाइजेशन, एनलाइटनमेंट, ऐसा शब्द होगा. तो योगा फैक्ट्री का एंड रिजल्ट क्या है? These things, which is fundamentally dissolution of life. Yoga basically means dissolution of life. We are not trying to push you towards yoga. We are trying to push you towards life. हम संसार की तरफ में आपको पुश कर रहे हैं, मुक्ति की तरफ पुश नहीं कर रहे हैं. So you should be able to experience life better, hold life better, do your bodily functions properly, come out of disease and experience life in a better way. हम ये चाह रहे हैं. So it is diametrically opposite or 180-degree opposite to yoga. It is therapy. This is Kumbhak therapy, not yoga. Kumbhak means hold. Without hold, there cannot be any life. As I told you, throughout the day, you use Kumbhak. You hold your thought in your mind is also Kumbhak. You hold an emotion in your heart is also Kumbhak. You hold your life for a certain period of time. That is also Kumbhak. The moment you are not able to hold your life, you are gone. So hold is Kumbhak. Without hold, there cannot be any life. So let's do one method. एक method करते हैं. So I have just answered somebody. Anil Gupta ji, आपने सुना नहीं? I have just answered what is Kumbhak. अगर नहीं सुना किसी ने, if somebody has not heard these things, this link of this webinar will be shared in the WhatsApp group. आपके ग्रुप में वेबिनार का लिंक भेजा जाएगा. यू कैन वॉच दिस वेबिनार अगेन. दोबारा से आप देख सकते हैं और किसी को दिखा भी सकते हैं. सो लेट्स डू वन कुंभक. इतना इम्पेशंस क्यों है? मैं तो बोला कि हम कुंभक करेंगे. सांसों को कुछ समय रोकना ही कुंभक नहीं है. दैट इज व्हाट आई हैव एक्सप्लेन्ड. इट इज सांसों को रोकना भी कुंभक है.
वही कुंभक नहीं है, भी सांसों को रोकना भी कुंभक है, इमोशन को रोकना भी कुंभक है, थॉट को रोकना भी कुंभक है, पानी को रोकना भी कुंभक है, लाइफ को रोकना भी कुंभक है. So we will do a variation of what is called as रुद्र व्यान कुंभक. एक वेरिएशन किस कुंभक का? रुद्र व्यान कुंभक. Now रुद्र व्यान कैन बी डन इन thousands of ways. इसको हजारों तरीके से किया जा सकता है. उसमें से एक मेथड मैं बता रहा हूं. I'm telling you one method. We use this method in the program in a different way. हम इसी मेथड को यूज करते हैं एक अलग तरीके से प्रोग्राम में. We customize it according to you. So let me tell you clearly, whatever method that I am teaching you is not a therapy. आपको जो मैं मेथड रुद्रव्यान का सिखा रहा हूं वो थेरेपी नहीं है. इट्स अ जेनेरिक मेथड. थेरेपी करने के लिए क्या करना होगा? वी विल हैव टू डायग्नोज यू. तो डायग्नोसिस तो किया नहीं आपका, तो दैट इज व्हाई आई एम टेलिंग यू जेनेरिक मेथड. एक जेनेरिक मेथड बता रहा हूं. सब कर सकते हैं, फायदा उठा सकते हैं उससे, बट इट इज नॉट अ थेरेपी. वो आपको पूरी तरीके से ठीक नहीं कर पाएगा. दूसरी चीज ये कि देयर आर सर्टेन कंडीशन. थोड़ा सा कंडीशन बता रहा हूं. यू कैन डू इट ऑन चेयर, ऑन ग्राउंड, कैसे भी करके बैठ के कर सकते हैं. जस्ट डोंट सपोर्ट योर स्पाइन. अपनी रीढ़ की हड्डी को सपोर्ट ना दे. दैट मीन्स डोंट टेक अ बैक रेस्ट. पीछे का टेक नहीं लगाना आपने. स्पाइन को फ्री छोड़ेंगे और थोड़ा सीधा रखेंगे. स्पाइन को फ्री छोड़ेंगे क्योंकि वी विल बी क्रिएटिंग एन इंटरनल ट्रिगर. अंदर भी ट्रिगर क्रिएट कर रहे हैं. सो wherever we want it has to go there. वहां पे उसको जाना चाहिए. दूसरी चीज, whenever you are in a little light stomach condition, थोड़ा पेट हल्का है ना में करेंगे. when you are in a little light stomach condition, that means after 3 hours from a full meal. एक मील के बाद 3 घंटे हो जाए ना, करें आप. if you are little light in stomach, then you do this kumbhak. Otherwise you will feel pukish. थोड़ा उल्टी जैसा लगने लगेगा. So if you are little light stomach condition, if you have that condition, do this method. Right? So we'll do it in 3 steps. 3 steps में करेंगे. First I'll tell you the method. Method मैं बताऊंगा पहले. Don't do it then. उस समय नहीं करना. Learn the method first. Listen to the method. Second thing, you do it with my instruction. मेरे instruction के साथ में करेंगे. Third time, you do it on your own and see that you are able to do this. अपने आप करके देखें कि आप ये कर सकते हैं. We will not repeat it many times. बहुत बार repeat नहीं करेंगे. You can watch this webinar again and again practice it. ठीक है? In the class, we create lot of tier support so that a person is able to learn and do it properly in their life. But यहाँ पे I'm just giving you a taster. मैं आपको just एक taste करा रहा हूँ. It is irresponsible to teach kumbhak in this manner. What I am doing now, this is an irresponsible thing to teach you kumbhak, what we deliver in the class, because that is a little profoundness attached to it. सबको ऐसे ही दे दो करके ये ऐसे काम नहीं करता. It doesn't work like that. So this is a generic method. Every one of you can do it, but don't expect a therapy out of it. जैसे योगा सबको सिखा देते हैं ऐसे, तो उससे बहुत लोग जो हैं उनको थोड़ा अच्छा जरूर लगता है, फायदा नहीं होता, वो बीमारी तो नहीं निकलती. So let's do it. What is रुद्र व्यान कुंभक मैं आपको बता रहा हूं. So what you have to do, क्या करना है आपको मुट्ठी बांध के रखना है थोड़ा टाइट. You have to clasp your fist, make a fist and clasp it a little tight and keep it on your knees. घुटने पे रखेंगे. Whatever you do, don't push yourself too hard. ज्यादा जोर जबरदस्ती नहीं करना अपने साथ में. पांव पे रखेंगे. Tense your toes. पांव के जो पंजे हैं ना, उनको आपस में भींच लें. पांव के जो पंजे हैं ना, toes of your legs, tense them tight. आपस में भींच के टाइट कर लें. Keep it tight. Tense your toes and keep it tight. उसको थोड़ा पांव के पंजों को टाइट करके रखना है. मुट्ठी को टाइट करके रखना है. ठीक है? फिर क्या करेंगे? You open your mouth. Open your mouth. Inhale from mouth and nostril both. दोनों से सांस भरना है. First time you inhale full. पूरी सांस भर लें. Second time थोड़ा और खींचना है. Third time पे थोड़ा और खींचना.
without exhalation. Inhale, inhale, inhale. 3 times inhalation. First time full inhalation, second time a little more pull, थोड़ा और खींचें, third time पे थोड़ा और खींचें, and hold. रोक लें. Press your teeth together. दांत को हल्का सा क्लास करके jaws को टाइट कर लेना inhalation के बाद में. Tense your jaws and tense the whole. पूरे शरीर को टाइट कर लें. ज्यादा टाइट नहीं, ज्यादा जोर. सुपरमैन नहीं बनना, सुपरमैन सुपरवुमन नहीं बनना. Tense mildly. Tense your whole body using these 3 trigger points: jaws, fist on your knees and toes. पूरे शरीर को हल्के से टाइट कर लें. Keep it tense for 8 counts. 8 गिनती तक टाइट रखेंगे. Keep it tense for 8 count. 8 गिनती तक टाइट रखेंगे. And then exhale as slowly as possible from the nostrils. नाक से exhale करना है. जितना धीरे हो सके उतना धीरे. जितना धीरे हो सके उतना धीरे. You should not make any sound. Ideally, exhale as slowly as possible. ठीक है? With the tensed body, body को tight ही रखना exhale करते टाइम पे. With the tensed body, you exhale, and after exhalation, you relax everything. Exhalation के बाद में बिल्कुल relax कर दे, सब कुछ relax कर दे. So let's do it. Let's do it. Let's start. Do it with instruction. मेरे साथ में करें. मुट्ठी बांध लें. Keep it on your knees. घुटने पे रखें. Tense your toes. Take the back rest. Back rest नहीं लेना. Tense your toes. पाँव के पंजों को टाइट कर लें थोड़ा. Open your mouth. Inhale full. पूरा inhale करें. पूरा inhale करें. Then pull a little more. थोड़ा और खींचें. और फिर third time थोड़ा और खींचें. Pull a little more. Pull maximum. And close your mouth. मुंह बंद कर लें. Tense your body. Tense your jaws. जबड़े को टाइट कर लें. पूरे शरीर को टाइट कर लें. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Exhale very very slowly. जितना धीरे हो सके उतना धीरे exhale करेंगे शरीर को टाइट रखते हुए. Keep your body tense and exhale as slowly as possible. And then relax. Relax. After exhalation, relax. So people who are who have lower back pain, slip disc, cervical issue, frozen shoulder, blood pressure issue, joint problem, metabolic issues, a weakness in the body, low energy, procrastination, lethargy, fatigue, ये जितनी सारी चीजें हैं, you will see, these all problems will get relieved. इनमें आराम मिल जाएगा. But whenever you do this practice, जब भी आप ये practice करेंगे, तो you have to do at least 8 rounds. 8 round करना है आपको, है ना? 8 round करना है. You'll see, you will be more stable in your body. The way you walk will change. You will have more focus. So what you are doing is basically empowering the interiority. अंदर की चीजों को empower कर रहे हैं. Whenever you hold and tense your body, do not move at all. You are not doing exercise. You are not doing yoga. शरीर को हिलाना नहीं है. जब भी सांस को रोक के शरीर को टाइट करेंगे, हिलाना नहीं है जरा सा भी. Keep your body absolutely still. So empowering yourself is something which is a must at this point of time. Whatever you do in your life, take medicine, not take medicine, go to a doctor, not go to a doctor, get a surgery done, not get a surgery done, whatever you do. But always keep a little method according to your body to empower your interiority. अपने अंदरूनी organs को empower करने के लिए जरूर कुछ करना चाहिए. बाकी आप कुछ, this is something which will reverse your disease. कोई और चीज reverse नहीं करेगी. So can you do 1 round on your own? क्या 1 round अपने आप करके देख सकते हैं? हाँ, 1 round अपने आप करके देखें. Just do 1 round on your own. Make fist, keep it on your knees. मुट्ठी बांध के ना ऊपर नहीं रखना, नीचे रखना, पाँव पे रखना. Keep it on your knees. Tense your toes. Open your mouth. Inhale 3 times. First full inhalation first time.
सेकेंड पुल अ लिटिल मोर. हेडेक किसी को हो रहा है ना, तो थोड़ा आराम से पुल करेंगे. हेडेक चला जाएगा थोड़े टाइम बाद में, माइग्रेन चला जाएगा. पुल 3 times. होल्ड, टेंस योर जॉज, जबड़े को थोड़ा टाइट कर रहे हैं. टेंस योर होल बॉडी माइल्डली. आई सेड माइल्डली, डोंट टेंस इट टू हार्ड. 8 counts in your mind. मन में 8 गिने. Count 8 in your mind. And then exhale as slowly as possible. Whenever you are holding, don't move at all. बिल्कुल हिलना नहीं है. Become statue. Exhale slowly and relax. If you have migraine, you'll see your migraine will get relieved. But अभी ना मैंने कहा सुपरमैन नहीं बनना. I told you not to become a superman or superwoman. हाँ? So don't do it very hard. Do it mildly. Slowly improve your strength. You are weak in your system. आपको समझ में आना चाहिए कि आपका सिस्टम एक वीकनेस है. वीकनेस है सिस्टम में. कुछ भी जोर जबरदस्ती करेंगे थोड़ा परेशानी आएगी. बट देयर इज नो साइड इफेक्ट टू कुंभक. कुंभक का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता ना. आप चले नहीं कुछ समय तक. इफ यू वॉक इवन, यू विल गेट अ लिटिल पेन इनिशियली. दैट इज अ लिटिल टीथिंग प्रॉब्लम. बट ध्यान से करें. यू डू 8 rounds ऑफ दिस. ऑलवेज गिव अ लिटिल गैप बिटवीन 2 rounds. 2 round के बीच में कैच योर ब्रेथ, गेट योर ब्रेथ थ्रू नॉर्मल. सांसों को सामान्य होने दें, उसके बाद ही अगले राउंड के, है ना. 8 राउंड करके देखेंगे. you'll feel completely different. Lot of energy, lot of strength in the body. Anxiety issues, है ना. solution नहीं है, लेकिन ये थोड़ा फायदा होगा. just to give you a little taster, right? So that is what I had to say. यहाँ पे मैं रुकता हूँ. हाँ, the team will take it forward. Team आगे ले जाएंगे. हाँ, I'll stop here. Right, sir. So just to apprise you, thank you sir, thank you so much. काफी सारे लोगों के सवाल हैं, प्राइजेस क्या हैं, एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहे हैं. Any kind of a, if you're doing, you don't have to apply too much of pressure while you're doing it. आराम से करेंगे तो आपको कोई दिक्कतें महसूस नहीं होंगी. You'll just seek or gain the benefits. Just to apprise you some of the experiences. पूरी तरीके से मेडिसिन में आने वाले बहुत सारे लोग हैं. उनमें से कुछ एग्जाम्पल: tachycardia, hypertension and several other things, weight loss, migraine, bloating, बहुत सारे ऐसे इस तरह के issues हैं. बहुत छोटे से समय में medicinal dependency आधी या उससे भी कम होना. So some of these people, for example, Mr. R.C. Gupta, उनका आपने वीडियो भी देखा था, same person talking. Then there are several other issues, combination of different factors which we have been talking about. Energy levels ka higher hona and so on. So many things that if you address the root cause or root causes, you would be able to come out of many connected and even disconnected issues which come together. Now, one thing, again and again, it has been repeated in the session by Swami Raj Vibhu. Kumbhak therapy is not like pranayam, meditation or yoga. In fact, it is exactly the opposite. It is not leading you towards moksha or mukti and so on. It is to rejuvenate something which is dead or not working properly. It's completely personalized and therapeutic. The whole program is done completely online. And the aim of the program's aim is to get rid of medication completely, all your symptoms completely, and also prolonged dependency on Kumbhak therapy. जरूरी नहीं कि Kumbhak therapy आप lifelong करते रहें, but हाँ, अच्छा लगेगा तो करिएगा बिल्कुल. It does not involve any kind of hand or leg movement, no exercises, no diet, no medicine, not even Ayurveda. But yes, there are certain guidance, lifestyle oriented guidance to support your recovery. कई सारी चीजें बताई जाती है for detox and for your digestive system and several other things, but nothing oriented to diet. There is no dietary precaution. बहुत सारे और benefits होंगे, energy levels and so on and so forth. But mainly the program format is of 3 months. पूरे प्रोग्राम के बेसिकली 4 हिस्से हैं. There are 4 parts to the entire program. The first part is about learning, which is most important. So the learning classes, there are 3 important learning classes which happen over a period of 3 weeks, which are, all of these classes are live. They are all 90 minutes.
we do have an important structural element of prana shakti diagnosis, basis which aapki kriyaएं बताई जाती है, and there are several other bunch of sessions. So prana shakti diagnosis, again, it's a very simple online form which asks you simple questions about your lifestyles to determine which of those 84 factors have gotten weakened in you. And we also ask you to perform a very simple kriya. We give you video training on it and so on and so forth. And you have to take account of how much you can hold, inhale and exhale, basis which we understand what is the prana shakti, or basically what is weak, to what degree it is weak. Uski basis pe of the lakhs and lakhs of Kumbhak therapy kriyas, we would be in a position, or Mr. Rajiv Ranjan, Amiraj Vibhuji would be in a position to pick up exactly what will work for you. पहली क्लास आपकी बेसिक कुंभक थेरेपी की है टू acclimatize you towards कुंभक therapy. After that you receive your prana shakti diagnosis form. Meanwhile the diagnosis is happening, your individual kriyas are coming up. बीच में आपका एडवांस कुंभक थेरेपी का क्लास होता है which is a little more complex. The idea is to prepare you for personalization, and finally in the third week we have the personalization. You already get that result of diagnosis in a PDF format. तो वो आपको मिलती है, and those kriyas are being taught to you in the personalized class. Alongside, there is a 4-year support mechanism through and throughout. What is that? There is a program mentor associated to guide you and nurture you and question you and, you know, just to propel you in your journey. There is a WhatsApp and a phone call support from 7 a.m. in the morning till 10 p.m. in the night, so practically 24/7. You can also get into an individualized video discussion to quench your thirst or inquisitiveness, or ask your queries, or get certain matters resolved. So that also you can go ahead and do. Primarily, the pillars of the program are, these are the 3 things on which the cost is based: root cause diagnosis or personalization, and providing you the continuous support through and throughout for the entire length and breadth of this program. And also there is an extended phase. Now this is where I would like to explain the entire program, which is into 4 phases. Phase 1 is about learning, which is about 15 to 20 days. Usme classes hoti hain. Then there is a 40-day period of helping you come into a discipline of doing it correctly and doing it regularly. So that is the implementation phase. Then there is a practice correction phase. In the practice correction phase, there are 4 sessions in the 3rd month. So we talk about any mistakes that you are making, we correct them. If your body has evolved, which it does, then we go for fine tuning, and we also give you knowledge about how to understand your symptoms, and interpret your tests and readings and so on, and how to step by step come out of medicine. Now, how is the program experience or session experience? Your video is always on. Every kriya is repeated some 3 or 4 times. Since your video is on, whatever mistakes you are making, you are corrected within the session over a chat, and basically basis that you learn within the session itself. You don't, the only thing you have to take precaution of, you can be sitting on a chair or a bed or this, that, none of that matters. The only precaution you have to take is that you shouldn't be taking a back rest. Session ke dauran aap seekhte ho. Session ke baad mein you do get a session recording which is kept in a special login for you for the entirety of your lifetime. तो वो एक्सेस रहेगी व्हाट्सएप में घूमना एंड ऑल, नन ऑफ दैट हैपेंस. यू डू गेट एन इंस्ट्रक्शन सेट इन बोथ हिंदी एंड इंग्लिश. यू आल्सो गेट अ फॉलो अप सेशन. 3-4 दिन आप खुद से करके देखिए, सारा सपोर्ट मैकेनिज्म है. इफ यू आर गेटिंग स्टक, इफ यू डोंट हैव कॉन्फिडेंस और whatever you want to repeat the classes, you can come into the repeat session. So 15-20 days wherein we have 3 learning classes, 3 repeat sessions and all of that. Then implementation phase, then practice correction की phase, और चौथी फेज वो जब तक के आपका तीनों कंडीशंस मीट नहीं हो जाती. क्या कंडीशंस यानी कि योर सिम्टम शुड बी कंप्लीटली गॉन, योर मेडिसिनल डिपेंडेंसी शुड बी गॉन, योर डिपेंडेंसी ऑन कुंभक थेरेपी आल्सो शुड बी गॉन. जब तक वो नहीं हो जाती तब तक आपके साथ में गारंटीड सपोर्ट रहता है फॉर 4 years. That we have explained just now. Now, all you need to do is you need to learn this module as a 30-minute module. 20 minutes आपने morning में करना है सुबह, और 10 minutes शाम में. Efficacy rate, 78% of the people have benefited from this program. 25%, and this is within a period of 3 months. So 25% medicinal dependency has completely gone. Additional 29% medicinal dependency reduced by more than 50%, and additional 24% the symptoms have improved.
but the doctors are controlling their medication levels. तो वो change नहीं हुआ है. Cost of the program. Cost of the program is, I'll come to that. मैं आपको लिए एक छोटा सा poll भी मैं एक चालू करना चाह रहा था. So those of you, please make sure that you respond to the polls so that we know that your interest in the program or whatever we have shared with you. And in case you require a call or guidance or assistance, abhi sare questions hum lenge. That's fine. But so this is the efficacy of the program. Cost of the program is 8,000 rupees for all the webinar attendees. Now there is an additional discount of further 500 rupees जो आपके लिए applicable है, available है till 8 p.m. tomorrow. So how you can go ahead and make these payments? You can make these payments through all kinds of methodology, UPI, bank transfer, credit, debit card, and so on. All of this is there. The program is starting on a Sunday. So all these learning classes are going to be at Sunday, 7 a.m. in the morning for 90 minutes, starting 23rd of May. There is a website, you can check the website. सारे आपको description दिया जाएगा, group chat में सारी चीजें share करी जाएंगी. I would request each and everyone to unmute yourself now and you can ask your questions. I have allowed you to go ahead and do that. Meanwhile, I'll be picking up a few questions from the chat. मैं ये screen थोड़ी देर के लिए hold कर देता हूँ so that somebody taking a screenshot and hello. Yeah, yes ma'am, go ahead. Yeah, hi Ayush. Ayush, the thing is this, my son has some problem. He's under the diagnosis of autism. Might you heard or not, I don't know. तो sometimes मेरे लिए easy नहीं होता कि मैं regular exercises और कुछ भी ऐसा कर सकूं. तो can I skip it for few days because मुझे out of station जाना पड़ता है अगर मैं enroll करती हूँ program में तो. Yeah. So I think this question can represent a lot of people. बीच में अगर कुंभक थेरेपी किसी कारणवश आपको कुछ समय के लिए छोड़नी पड़ जाती है, we don't want you to do that deliberately, but अगर छोड़नी पड़ जाती है तो it's not that whatever you have gained is going to completely reverse. कुछ एक दिनों का अगर गैप आता है तो that's fine ma'am, but then if the gap is like say 1 month or something like that, then obviously there would be limited benefit. And how long we have to continue this? Till your symptoms would suggest you. Usually people take anywhere between 2 months to 8-9 months and so on to completely get rid of their medication. The symptoms will not come again? Yeah, that's the idea. The idea is that the symptoms should be all gone. Permanently they should be gone. Okay. Hello. So is the class individual or is it in group? The classes would be in group, ma'am. Okay, and how big would the group be? Usually around, I mean, we can't say honestly, but usually around 40-50 like that. 40-50 you said, sir? Yes, that is correct. Okay, sir, but if they will be having all different sets of conditions, different permutations and combinations of problems, the diseases, then how will that be handled? I mean, will individual attention be given in that case? Here I would so many people? Yes, of course. So here I would like to bring to your attention that, to understand the concept of Kumbhak therapy itself. So there are 84 principles on which a body works from a functional perspective. Our job for every individual having 10 different diseases, we can call it by whichever name or lab reports may be indicating X or Y or Z. The point is all of these things, they have to have an underlying root cause. So we are trying to identify that underlying root cause, such as Swami Rajvivu mentioned about Udana factor, for example. So which of those factors have gotten weakened for you and to what degree they have gotten weakened for you. So everyone is going to get their individual kriyas to perform. So it's not like, there are 10 symptoms which have to be tracked and so on, and individual has to be guided on to diet and this and that. None of that is required basically in the program. You have a certain set of kriyas. You might be facing a lot of challenge in performing those kriyas accurately, which is why we have this elaborate support mechanism, OTS support mechanism. WhatsApp group is there, phone call is there, mentor support is there, as well as you can get into an individual video discussion. So if you are getting really stuck, you can get into an individual video discussion.
Hello, hi So, sir. sir, but How are basically all the 40 to 50 just people will be doing the same no, 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 just same a minute. kumbhak, right? Let me address that. Let me address that. So what happens? I sit with individual diagnosis. You fill up this diagnosis form and send a picture of yours, and then I sit with individual diagnosis for a certain period of time. It takes some time to do the diagnosis. So diagnosis is done by me separately on individuals, but you are not there. So we teach you some basic things and we give you customized things in the third class. Now in the third class, everybody gets their customized PDF and we tell them how to do those methods, incorporate it along with the other that they were doing. And there is some change in the methods that is done for the individual according to the diagnosis. So in the third class it is done, then there are follow-up classes after every class where if somebody has any kind of a problem, the method is corrected, the kumbhak is corrected, and it is all kumbhak. It is not kriya ayush. So these are all kumbhak. So every kumbhak is corrected and refined and fine-tuned according to the person, which gets you try to do it. If you have any problem, there are mentors and there are follow-up sessions. You can ask in the group. You have a video link. You have the PDF with the step-by-step methodology. So that is our speciality, that every one of you get an individual attention in the group. That is what we have ensured. Not even one complaint we have received towards this, that there is something wrong with this method. So everybody can easily attend the program. Even if we have 200, 500 people, still we will be able to do it properly. Can I ask a question, please? Yes, Jyoti ji, please go ahead. Yeah, I have just recovered from COVID, and it has given me a lot of weakness after doing the exercise which you just did. I don't know, but then the coughing started. So would it be recommended for me to right now start it? Why the body coughs? It wants to throw out some toxin. So if your detox process has started just by doing 1 or 2 rounds, do you think what it can do for you? It can completely clean you also. Okay, Yes, it is of course recommended. I have thyroid since last 20 years post delivery of my daughter, and I think I have been dependent 100 mg. So would it take longer time? It is body specific or what? Yes, this is body specific. So according to your weaknesses, you are basically empowering your internal function. It will take different amount of time for different people to get to that stage where you do not need medicine, right? So it is individual specific. It will take different amount of time for different people, but everyone will get benefited. That is guaranteed. Does it have any side effects? No, it cannot have any side effects. Anything with your body's own mechanism. Body always protects itself. It doesn't give you any side. Like you said, cough. The whole idea, the wrong idea that human beings have got into is that whatever body is wrong. That is why in this corona, people who are taking medicine, they are taking long time to recover. Whereas people who are not taking medicine, within 3 days it goes off. Not even 3 days, it takes even less than that. So body does whatever body does, it is to protect you. So your body has the kumbhak as a mechanics in it. Now, is it to destroy you or protect you or make you function better? It will always work towards making you function better. Luckily, in 20 years, I do not even have BP, no sugar. My weight is also not very much, but thyroid dependency is very high. And unfortunately, in COVID, my thyroid from hypo became hyper. Yes, it might change to different. See, it is your body's adaptive mechanism. It always adapts to a situation. So now, if I take the classes, will it be for hypo or for hyper? Yes, it has to get balanced. That's it. It has to get balanced. Basically, we are talking about creating a balance, a proper functional balance. So the hyper will come down to normal and the hypo will come up to normal.
That So is right what now, we are if I, trying. what should I say? I am a hypo patient or hyper patient? Well, I do not know that. Well, I was hypo earlier, and post-COVID medicine, when I got my test done, it came as hyper now. Ma'am, you might not be any